Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. With the Arabian Sea on the west, at the tropical Malabar coast of southwestern India, stands Alappuzha, also known as the Venice of the East. The chain of brackish lagoons and lakes surfaces like a maze, parallel to the Arabian coast, with backwaters formed by the action of waves and shore currents across the many rivers, resulting in a large grid of freshwater crossways. The moderate climate and awe-inspiring beauty of these backwaters makes Kerala unique as an incredible tourist destination all through the year. Right from my childhood days, I was mesmerized by the serene backwaters of Kerala. I was intensely in admiration of the artistry of tall coconut and palm trees around the periphery of the water body as I reached there to feast my eyes and satiate my juvenile curiosity. It gave me the feel of a small neighborhood town as I directly ushered to the backwaters to enjoy the tranquil marine beauty and witness unaccountable number of boats cruising around. Houseboat tourism is considered to be one of the best brands of the state's tourism sector, by generating huge foreign exchange and providing employment. The backwaters of Kerala are historically important. They are interconnecting navigable canals and have made a number of rural tourism destinations with matchless beauty. These backwater systems were once Kerala's own trade highways. The major component of backwater tourism is houseboat cruising. In recent times, the state has sensed the potential of backwater tourism. However, unsustainable mass tourism movement along with climate change is a threat multiplier in this sector and has impacted the coastal lives to a large extent. The place, known for its enchanting beauty and a growing tourist hotspot, jolted me to the reality when I experienced the actual scenario underneath the surface of famed backwaters. The canals surrounded by the commercial places couldn't hide the stark reality of the present state, since the tourist boats are threatening this exquisite natural environment. These visuals are unable to put across the unsurpassable
nauseating stink coming from the place touted as a land of fantasy where several thousands of tourists flock every year. As we took a boat in the Alappuzha canal, we were to witness a pile of filth choking up a stream along with the malodor coming from the backwaters, and all my fascination and the excitement ebbed away and got altered with the dispirited agony and aghast. Unregulated expansion of a number of boats cruising on the backwaters and unsustainable practices have inflicted several impacts on the environment, and there is an urgent need to evaluate their safety and service standards. ये जो पानी है, ये इधर का जो भी दुकान है, सब कचरा इधर ही आता है। ऐसा क्यों करते हैं फिर? ऐसे फेंकते हैं लोग, म्युनिसिपालिटी लोग ऐसे ही आग बंद कर देते हैं। तो 20 साल पहले पानी ऐसे ही गंदा था? नहीं, 20 साल पहले बहुत अच्छा पानी था। ये पानी 20 साल, मेरे हिसाब से 20-25 साल से पहले ये पानी पीता था, ऐसा पानी था। और ये बोट अब ऐसा हाल कर दिया। अभी तो ऐसा हाल हो गया। अभी ये बोट का डीजल है, पेट्रोल है, ये सब है, और प्लास्टिक वगैरह है, सब इसी में है। The petrochemicals used by the engines of the houseboats coat the gills of fish, causing their depletion. And it also results in the decline of exotic bird species of the backwaters. Alappuzha is surrounded with canals. So the main attraction of the Alappuzha is boating and beach. See, 80% of the people are coming from different, come and go for a boating in Alappuzha. So when these people are traveling, doing boating, there is no proper place for the disposal of these things, wastage and all. So simply they will put the things in the canals. So we have to educate it. Education is the more important, I think, for this waste management and all. The paddy fields are directly irrigated by the backwaters, carrying along the oil, sewage and rubbish from the houseboats flowing into them, which is damaging the environment and the ecosystem of the lakes. The muddied water from the population in and around the waterways, oil from engines, plastic and food wastes are directly released into the water bodies, which leads not only to waterborne diseases, skin afflictions, and life-threatening diseases to humans, but are also causing a huge decline of the fish population in the water bodies of Alappuzha. पोल्यूशन ज़्यादा नहीं है, मतलब पेट्रोल से चलता है, जैसे गाड़ी का ही है, बस तो उतना ही पोल्यूशन होता है। इसमें ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, इसमें मतलब अपना स्मोक ज़्यादा नहीं आता है, और अपना इसमें मतलब डीजल से जो चलता है, वो बड़ा वाला जो बोट है, उसमें तो पोल्यूशन होता ही है। ये पेट्रोल में चलता है, इतना पोल्यूशन नहीं है। और ये जो हाउस बोट्स हैं, इसमें जो वॉशरूम का कचरा है, वो सब कहाँ जाता है? ये मतलब हैंड वाश का, मतलब अपना वाश बेसिन का जो कचरा है, अपना मूड होता है, ये सब डायरेक्ट ही देता है इन लोग।
बाकी सब अपना टॉयलेट वगैरह के लिए उसमें एक्स्ट्रा टैंक रहता है, टैंक भर जाता है, उसके बाद वो लेके जाता है गाड़ी में। तो आपको लग रहा है जो पानी आप पहले पीते थे 20 साल में और जो आप पानी पी रहे हो उसमें कुछ टेस्ट में फ़र्क है, कोई बीमारी? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क हो। तो अभी तो पी नहीं सकते हैं। 20 साल पहले के बाद तो हम लोग यही पानी पीता था, खाना बनाता था ये पानी से। अभी तो हम लोग को नहाने के लिए भी मुश्किल है, ये ऐसे हाल हो गया इधर का। Though there is designated location for waste discharge, but rules are blatantly ignored by boat operators cruising around. There are laws which are in place, but somehow it's a matter of applying them with our own consciousness, or maybe more stringency is required. A sustainable tourism model can ameliorate the capacity building endeavors of this destination. We also need to incorporate sustainable development as a subject to save our environment as a mission for all of us. Though the islanders have been provided with clean city water, but the supply often dries out. Oblivious of the ecological threat and looming health hazards, the people around the backwaters of Alleppey can be seen using this water directly for cooking, drinking, and washing, as the adequate drinking water to the region may not be proportionate. One can simply imagine the disturbing devastation being ensued from the rising toxicity of backwaters in a couple of years if this deterioration remains unchecked. The threatened ecosystem, contamination from pesticides, dumping of chemical emissions from factories, sewage from cities, reduced fish wealth, and the unregulated tourism boom. All of these create a repulsive cacophony amidst the tranquil setting of the backwaters and highlight the challenges ahead of this dream destination. The Tourism Department, in association with Kerala State Pollution Control Board, has to take stringent measures to implement strict laws on the defaulters. A sustainable development framework needs to be focused on for Alappuzha as a destination to maintain its pristine environment. The resorts, hotels, and establishments must not channelize their sewage vents into the water bodies, and they should be held accountable for flouting the rules. Ethical conduct of business must be thoroughly monitored. The local community has an important role to play in advocacy, capacity building, and sensitization of governments, industry, and the public. But houseboats alone cannot be blamed for the toxicity of the water. The feces and exhaust fuels released daily into the water also account for maximum toxicity of the backwaters.
अभी हम देख रहे हैं कि आसपास सारी हाउस बोट्स चल रही हैं, तो पहले कितना नंबर था और आपके 20 साल रहते रहते कितना 20 साल नंबर पहले हो गया? तो मोटर में चलाने वाला कोई बोट नहीं था, अपना हाथ से चलाता था। वो जो बड़ा बड़ा जो डंडा जैसा होता है उसी में से चलाता था। अभी जो उसमें अपना थाईलैंड का टाटा का इंजन लगाया चलाया, एसी है। पहले ये सब नहीं था, पहले ऐसे ही चलता था, मतलब एसी नहीं था, हाथ से चलाता था। इस टाइम ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता। अभी जो डीजल का और पेट्रोल का मतलब इसका इंजन आ गया और इसका तो सुविधा ज़्यादा बढ़ गया, इसी वजह से ज़्यादा पोल्यूशन भी हो गया। और सरकार ने भी अगर इसी सही से कानून से अगर इधर चलाता था तो इतना पोल्यूशन नहीं होता। तो आप क्या कहना चाहोगे एक आम इंसान को जो यहाँ घूमने आता है और आपके जो साथी हैं उनको, दोनों के लिए क्या मैसेज दोगे? मैसेज क्या है हम लोग के लिए, हम अगर टूरिस्ट लोग इधर जो भी आदमी घूमने आएगा तो अपना रोज रोटी का काम चलता है, तो हम क्या सोचते हैं इसमें हमेशा अच्छा रहना चाहिए था। तो आज अच्छा रहेगा, कल दूसरा गेस्ट आ सकता है, अपना रोटी चला सकता है, अपना घर चला सकता है। अभी ऐसे हाल चलेगा तो मुश्किल है, तो अपना भी बिजनेस बहुत मतलब डाउन हो जाएगा। हम लोग को अच्छा रखने के लिए हम लोग को अगर मार्जिन में वो भी प्लास्टिक या कुछ भी फंस गया तो हम लोग संभाल कर रखता है, उसको लेके जिधर फेंकता उधर हम दबा देते हैं। तो ऐसा नहीं, इधर ही नहीं फेंकता। और ये छोटा छोटा होटल वाला भी है, जो उन लोगों को भी कचरा मतलब रात को इधर ही फेंकता है। उनको क्या है, उनको अपना जैसे अपना घर है ऐसे संभाल कर रखना चाहिए। ऐसा संभाल कर रखेगा तो अपना कल भी जो भी टूरिस्ट लोग आता है उन लोग कल भी आ सकता है। इसलिए लोग को ये बोल रहा है कि अपना खुद अगर संभालेगा तो कुछ कचरा ये संभाल सकता है, मतलब कम कर सकता है, गंदगी कम फैल सकता है। The tourists inquiring about the foulness will be assured that the boat they are on is certified, has a sewage tank on board, and doesn't contribute to the filth that can be seen around. This is the law, as a boat is not allowed on the water if it doesn't have a tank, and every boat must stop by the nearby sewage plant before disembarking its passengers. Now the pertinent question is, do the boats abide by the rules? ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज कुछ मना नहीं करती कि पानी मना करता है, लेकिन लोग क्या करो वो समझता नहीं है। अभी आपको आगे जाकर बहुत अच्छा पानी मिलेगा, मीठा पानी। बारिश होती है यहाँ पर तो पानी ऊपर आ जाता है क्या? हाँ आता है इधर, ज़्यादा पानी भर जाता है? हाँ जी, बारिश के टाइम ज़्यादा पानी आ जाता है। इसमें 3 मीटर होगा अभी, 3 मीटर पानी है? हाँ जी। तो इतनी बदबू आ रही है, लोगों को नहीं पता चलता कि इसकी सफाई रखें, गंद सरकारी नहीं लोग आग फेंकें। बंद कर देते हैं। आपको क्या लगता है कौन रिस्पॉन्सिबल है? सरकार का ही है ये, और किसी का सरकार की हाँ, ड्यूटी है। सरकारी जैसे अच्छा तरफ से देखेगा तो वो अपना कानून का जो नियम से अच्छा से देखेगा तो इधर तो पानी अच्छा होगा और कचरा लोग फेंकेगा नहीं है। तो अब जैसे आपने कहा कि लोग कचरा फेंकते हैं, दुकानों का कचरा आता है, तो फिर सरकार की कैसे ड्यूटी बनती है? सरकार इसको चेकिंग करके इसको पकड़ना चाहिए, अच्छा इसको फाइन भी मार के एक दुकान के आगे वो डस्टबिन रखना चाहिए। उसके लिए सुविधा अगर सरकार करेगा तो ये पानी गंदा नहीं होता। तो आप लोग मिल के कुछ ऐसा बना सकते हैं कि सरकार अगर नहीं काम कर पा रही, उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पा रही और इसकी सफाई करने का कोई जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं? हम लोग भी खुद का ये देखो अपना बोर्ड का देखो सामने जो क्लीन कर रहे हैं लोग, ये अपना बोर्ड का ये म्यूनसिपाल्टी लोगों तो ये पूरा डाल के ये देखो क्लीन कर रहे हैं। इन लोग को खुद का बोर्ड है, इन लोग अपना इधर क्लीन कर रहे हैं। तो आप लोग के बोट्स वालों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो काम करते हैं इस सफाई करने को, तो
आपको जब 20 साल पहले आप छोटे थे तब याद है कि इतना गंदा नहीं था? ना ना बिल्कुल नहीं। तो 20 साल में इतना गंदा हो गया? ये मेरे को लग रहा है अभी 20 साल 15-20 साल होने 20-15 साल हो गया मेरे को लग रहा है ये कचरा इतना ज़्यादा। तो आपको कंसर्न नहीं हो रहा कि इतना गंदा कर दिया इसको? हम लोग बहुत बार मीडियम में और अखबार में बहुत कंप्लेंट किया था, लेकिन कंप्लेंट आता है लोग सोचता नहीं है, कोई सरकार इसका कोई एक्शन नहीं लेता है। ये दुकान वाला सब प्लास्टिक फेंकता है, अभी तो कम है फिर भी। We cannot point a finger at the tourists who are enjoying the ride, though their negligence is distressing. The truth is that not enough thrust is given to the issue of backwater pollution. The people most affected, the islanders themselves, have not yet warmed up to the idea of boycotting the offenders, as economy always gains over ecology. While the tourism boom has certainly benefited the state and created a reliable income source for many locals, preserving the backwaters of Kerala and its ecology is of utmost importance. Then, what is the way forward? Is sustainable development the way forward to preserve the tranquility of the shimmering backwaters? Can informed tourists spread the word and help save this natural habitat by opting for solar-powered boats and non-motorized canoes? Or perhaps the solution lies with the local inhabitants themselves, and they have the key to become green leaders, to stop turning the backwaters into black waters. Solutions for being resilient. Being an ecotourism product, backwater tourism needs sustainable and responsible tourism practice. The houseboat cruising is the pioneer activity of backwater tourism. Considering the need for sustenance of this unique tourism product, it is mandatory to ensure the quality of facilities and services provided in the houseboats, including code of conduct of green tourism practice. There should be an auditing of the existing on-board sewerage plant system to implement sewage system in houseboat terminals. A regular system of collection of solid waste from the houseboats by sewage transporting vessels should be introduced. A regular collection and disposal of solid waste from the houseboat routes in the lake must be in place. Houseboat operators should be incentivized for the introduction of environmental practices which are friendly. Restrictions on the number of houseboats based on carrying capacity of backwater with respect to the environmental and infrastructural aspects should be introduced. There is a need to introduce the conduct of code for the crew as well as tourism for a happy and a sustainable backwater tourism. As the tall coconut trees, palms, shrubs, bushes and leafy plants along the backwaters gives a green hue to the breathtaking views of surrounding landscape, the real black hues of the backwaters seen around remain in our thoughts as we conclude our journey with our boatman cum guide.